जैसे क्लियर बना ब्लाउज का जरूर पड़ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है सर। क्लियर गोल होता है, Clear goal. कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, यानी कि यदि हम पढ़ने बैठते हैं Yes. तो हमारे दिमाग में क्लियर, यदि मैं बच्चों को बोलता हूँ Right sir. ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये आधे घंटे में बैठ रहा हूँ Right. तो मैं क्या पढ़ के उठूँ, हमारे लर्निंग कितनी होगी, ये कितना मैं तैयार करूँगा, ये जो टारगेट लेके बताएंगे क्या क्या मुझे आज करना चाहिए। Right. यदि वो दिमाग में है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और डाइवर्जन होगा इधर उधर नहीं बढ़ जाए। Right. Right. So it's like मतलब kind of Time bound. Yes. Time goal- bound. Yes. Yes. वो क्लियर होने से फोकस Yes. ज़्यादा Right, है right. कि हाँ ये ही मुझे करना है, not other things। Fixing the focus with more of clarity. Right. Wonderful. Okay. So sir आपकी कुछ concentration. Okay. Yes. योगा प्रैक्टिस कैसे है? Okay, so yeah, in fact, हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। What we do is हम लोग एक candle lit up करते हैं, right? And we tell them कि yes, you need to keep focusing on the flame of the candle without blinking your eyes, right? So basically तो वही है कि आपका focus fix करना बहुत जरूरी है। मैम ने जो कहा वो सच बात है, जो बच्चे हैं they are like bubbling with energy। अब उसमें उनके लिए एक जगह टिक कर बैठना भी बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो उनका जो पेशेंस लेवल एनहांस करने की बड़ी जरूरत है। योगा मेडिटेशन भी प्राइमरी इट्स ऑल अबाउट दैट। अब मेडिटेशन भी बहुत लोग नहीं कर पाते, आंखें बंद करते हैं वो नींद आने लग जाती है, राइट? सो ग्रेजुअली वही चीज है कि यू आर एबल टू जस्ट मेक योरसेल्फ स्टिल आल्सो, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। So that was about concentration. Yes, whichever next group wants to come up with their. Okay. आपका था how to develop confidence. Yes. The problem assigned to our group was how to develop the confidence among the students. So which is a great problem for our students. So we have suggestions discussed the evaluation of math. We have suggestions to make the students aware about their strength. They know their strength, then certainly they will be confident enough. Second one, to make them participate in non-competitive activities like taking part in morning assemblies, during class activities. These type of non-competitive activities will ascertain them for achieving greater confidence. Now, third one, to associate him or her with confident some other students who are more confident, then certainly with their company they will achieve some confidence among them. Next one, provide them regular and positive feedback. This will also release them with confidence. Next, to give them appreciation and moderation according to the situation. Suggest them some logical, you can say some positive. Avoiding comparison. Comparison should not be there. Whenever we are just praising them or giving some positive feedback, we should avoid comparing them with others. This will additional full confidence. Very nice. So this was group fantastic 5 catering to the problem how to develop confidence among students. आप में से कोई और